So this video we are gonna cover first part of MySQL. So what is MySQL? Actually, MySQL. MySQL is a part of RDBMS software. RDBMS सॉफ्टवेयर ही में इसका फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So what is this? Not required. नहीं समझना छोड़. बट जो लैंग्वेज यूज करी जाती है आरडीबीएमएस के लिए दैट इज नोन एज माइस्क्यूएल. नाउ एक क्वेश्चन जो होता है वो एक जो जनरल चीज होती है दैट इज रिक्वायरमेंट क्या है माइस्क्यूएल की. इतनी सारी लैंग्वेजेस है पाइथन जावा सी प्लस प्लस बट माइस्क्यूएल क्यों? सो बेसिकली इन एवरी कोडिंग लैंग्वेज इन एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज देयर इज अ ड्रॉप विच इज कि अगर आप कहीं पर एक वेरिएबल सेव करो लेट्स से a इज इक्वल टू 10 बट आप जब दूसरी फाइल खोलोगे तो उसमें वो वेरिएबल अनडिफाइंड ही रहेगा. एक ही वैल्यू इज नॉट 10 ए इज अनडिफाइंड इन दैट सेकंड अनलेस यू आर डिफाइन अगेन. बट माई स्केल में ये नहीं. इफ यू डिफाइन समथिंग इन वन प्लेस दूसरी प्लेस पर भी वो सेम चीज वहां पर रहेगी. सो दैट्स व्हाई माई स्केल इज डिफरेंट एंड माई स्केल is all about tables. An example table is this, and every table has a name. So this is a product table. तो यूजिंग दिस हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जैसे कि रिलेशन. नाउ व्हाट इज अ रिलेशन? एंड एनी आरडीबीएम. अच्छा बाय द वे दिस इज द आरडीबीएमएस टेबल. As of CBSE course, there is only RDBMS table. और मुझे पता नहीं सो है RDBMS टेबल ही है. एंड RDBMS टेबल का नाम है प्रोडक्ट टेबल विच इज द टेबल. सो रिलेशन क्या होता है? Relation is the table which is created in RDBMS is a relation. So the table is so this table is a relation. Now second चीज जो आती है वो attribute. What is a attribute? Vertical subsets. Attributes are vertical subsets. And attribute is also known as field and column. And similarly अगर vertical है तो कुछ horizontal के लिए होगा. So horizontal के लिए we have tuples. Now if you know Python, टपल्स का मीनिंग होता है बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर हम जो बात कर रहे हैं. टपल्स इन पाइथन इज डिफरेंट, टपल्स इन माइस्क्यूएल इज डिफरेंट एंड दिस इट इज हॉरिजॉन्टल सबसेट्स. एंड इसके भी नाम होते हैं जैसे एट्रीब्यूट के थे फील्ड एंड कॉलम एंड कॉलम ओनली एक्सप्लेन्स समथिंग. जैसे इसका भी एक है रिकॉर्ड विच अगेन याद ही करना नहीं मारनी. बट जो दूसरी चीज है दैट इज रो जो कंप्लीट एक्सप्लेन कर देती है कि नेक्स्ट. So P code is a no. P code PO1, PO2, PO3, PO4, PO5 is an attribute, and tuple is this is a tuple. So question इसमें से generally नहीं आता unless sims कुछ जैसे कि synonymous attribute is also known as hash to. But question आते हैं इस जगह degree. What is degree? Total number of columns.
And in this table it is so so basically degree is equal to number of columns and इस टेबल के हिसाब से that is 4. See, 1 we got 2 p in p quantity 4 plus. Okay, one important thing. अभी आपको टपल्स बताया था कि this is a tuple ना. So but the main thing is कि जो heading रो है जिसमें सारे नाम लिखे होते हैं p code p name q t price, that is not the tuple. और उसके नीचे से ही tuple start होते हैं. So these all are tuples individually, but that is not the tuple. So taking ये next thing, again very important, cardinality. Cardinality again सही पकड़ लो. Total number of rows. Again बिल्कुल सही कहा आपने, 5 है. So that is cardinality. And the main thing is domain. इसके रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन बनते हैं. So domain is pool of unique values. So क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ ये आएगा जैसे कि अगर इस टेबल के में क्वेश्चन आएगा, राइट द domain of p name. So basically एक कॉलम दे दिया p name, कॉलम ये है हमारा, एंड वी हैव टू टेल कितनी यूनिक वैल्यूज है. अब यूनिक वैल्यूज क्या है? सबसे पहले पेन ड्राइव सी डी है, बस सी डी भी थोड़ा खुद बांध लेंगे, पेन ड्राइव नहीं लेंगे स्पीकर. तो क्या हुआ? सी डी ड्राइव. ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी में ऑर्डर में लिख सकते हो. पेन ड्राइव एंड स्पीकर. So these are unique values. So domain is unique values and uh, उसके ऐसे क्वेश्चन. अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है that is primary key. Very important. Very, very, very important. So what is primary key? Primary key, a key that uniquely identifies specific. So what I was saying, a key that uniquely identifies rows of a table. Of course, आपको इससे कुछ ज़्यादा नहीं समझ आया होगा. So let me explain briefly. A key is a field with special features. So अगर कहीं पर भी की लिखा हुआ है, that means कुछ स्पेशल काम तो हो रहा है. एंड इन दिस केस कुछ ज्यादा स्पेशल हो रहा है बिकॉज इट्स प्राइमरी. सो बेसिकली प्राइमरी की क्या होती है? जिसमें कोई भी डुप्लीकेट्स ना हो एक रो के अंदर. कोई भी डुप्लीकेट्स ना हो एंड कोई भी नल्स ना हो. नल का क्या मतलब है? वैल्यू इज नॉट एंटर्ड. लाइक अगर मैं इसे इधर कुछ ना लिखूं, क्वांटिटी की जगह से खाली छोड़ दूं, देन दैट इज अ नल. सो ये नहीं होना चाहिए एंड क्वांटिटी रिपीट नहीं होनी चाहिए. एंड अब अगर आप उसमें से देखो, पी कोड वैल्यू रिपीट हो गया नहीं, सब में डिफरेंट है. पी नेम नहीं हो सकता, वैल्यू इज रिपीटेड. क्वांटिटी वैल्यू इज रिपीटेड. प्राइस 700 सो वैल्यू इज रिपीटेड. सो इस टेबल के अकॉर्डिंग प्राइमरी कौन सी है? पी कोड. देयरफॉर पी कोड इज अ प्राइमरी की. बट अगर क्वांटिटी में वैल्यू रिपीट ना हो रही होती, लेट्स से 5 ये 12 10 नहीं है, ये 15 है, तो क्या क्वांटिटी प्राइमरी की होती? नो, बिकॉज देयर इज सॉरी 5 भी है, और 5 भी मान लो 25 होता. तो तब भी
क्वांटिटी स्टिल नॉट अ प्राइमरी की। वाई? बिकॉज देयर इज अ चांस कि अगर कोई और वैल्यू इसमें इंसर्ट हुए, एक और रो इंसर्ट हुए, देन उसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है, क्वांटिटी रिपीट हो सकती है, प्राइस रिपीट हो सकता है, पी नहीं हो सकता, बट पी कोड नहीं हो सकता बिकॉज और भाई पैटर्न में चल पीसी पीओ 1 पीओ 2 पीओ 3, सो वो नहीं हो सकता, देयरफॉर पी कोड इज अ प्राइमरी। क्वेश्चन इसमें से जनरली ये नहीं आता कि विच इज प्राइमरी की। बहुत आसान है आंसर, मतलब आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, ये नहीं आएगा, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड जस्टिफाई आंसर, जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइमरी की, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आएगा अगर सिर्फ पूछेंगे आइडेंटिफाई दी प्राइमरी की तो आंसर वेरी इजी, पी कोड। बट पी कोड का जो जस्टिफिकेशन है, पी कोड इज द प्राइमरी की बिकॉज इट हैज नो duplicates and nulls, basically. So now duplicates are ना nulls है, and that is the reason. And next जैसे प्राइमरी को गए, अब जो दूसरी की आती है, दूसरी की जो आती है which is also important, that is candidate. Now what is candidate? प्राइमरी की तो हो गया जिसमें यूनिक की होती है, but candidate की होती है which has the potential to becoming primary key, but it is not the primary key which is capable of becoming primary key, but is not primary key. The key which is capable of becoming primary key. Capable, not at all, which is not a primary key है, which is capable of becoming primary key. जैसे कि एग्जाम्पल में अगर है तो या सो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा टेबल देखते हैं। सो सी दिस टेबल। सो इसमें फिगर ध्यान दोगे तो हाउस कोड भी हो सकता है प्राइमरी की, हाउस नेम भी हो सकता है प्राइमरी की, ऑफ कोर्स पॉइंट्स नहीं हो सकते बिकॉज दैट वुड बी इक्वल, बट हाउस कोड एंड हाउस नेम both have coming a potential to both have a potential to become the primary key. So basically in this case both are candidate keys. Okay, so both are candidate keys. Okay, so बस candidate की भी इतना ही है। जो नेक्स्ट चीज आती है that is something alternate. Now what is alternate key? Candidate attributes that is not primary key. So basically a key which is a candidate key but not a primary key, that is an alternate key. And इस and इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। What is the formula? Alternate key is equal to candidate minus primary. Quite important formula. तो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज मॉडल की।
अगेन क्वाइट इम्पोर्टेंट बट नॉट ऐसे ही आगे जो टॉपिक्स आते हैं उनमें काफी इम्पोर्टेंट डिस्कस फॉर व्हाट इज अ फॉरेन की a non-key attribute whose value is derived from primary key of another table is named value. Accuracy. So basically अगर किसी और टेबल से एक वैल्यू हम दें एंड उसका यूज करें तो हम अपने नए टेबल में जैसे कि एग्जांपल के लिए एक टेबल है ये सो अगर आप ध्यान दोगे सो दिस टेबल एंड दिस टेबल हैव अ कॉमन फैक्टर हाउस कोड इसमें इसमें भी हाउस कोड है H1 H2 H4 उसमें भी हाउस कोड है सो बेसिकली होता क्या है दिस ये रिलेट कर देता है दोनों को सो बेसिकली दोनों टेबल्स जॉइन हो जाएंगे एंड हाउ विल गुड टू नो एक हाउस कोड है H1 जिसका नाम है एयर जिसके स्पॉन्स है 400 जो जिसकी पोजीशन है फर्स्ट एंड इसका इवेंट है म्यूजिक सो बेसिकली इन दूसरे टेबल को डालने से फर्स्ट टेबल से रिलेट कर लिया एंड सब कुछ हाँ डिटरमाइन हो जाता है कि क्या चीज कहाँ पर आएगी दोनों ज्वाइन हो गए सो व्हाट इफ अगर इधर H5 लिख दूं ऑफ कोर्स अगर इधर हम H5 के साथ कोई लेट्स से म्यूजिक कर दें एंड इधर फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन so basically then this will be error why because ये जो H5 है इधर पॉसिबल ये इधर है पिछले टेबल पे एंड बिकॉज ये प्रीवियस टेबल पे नहीं है therefore H5 डालेंगे अगर हम इंसर्ट करेंगे then that will show error so we cannot show that and next thing जो आती है जो हमें करनी है next key which is unique what is unique key a key that uniquely identifies rows of, of a table so इसका क्या मतलब है बेसिकली इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इससे क्वेश्चन क्लियरली बनता है as but जो मेन चीज जो याद रखनी है that is no duplicates बट अब इसमें क्या डुप्लीकेट तो प्राइमरी की भी पार्ट मेन चीज आती है नल्स आर अलाउड तो इस पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बट नल हो सकता है वैल्यू एम्प्टी हो सकती है बट नल नहीं होना चाहिए नेक्स्ट जो होती है दैट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी व्हाट इज दिस more than one column define this primary so basically जब एक से ज्यादा कॉलम प्राइमरी की होता है now अगर now don't mix it up with with don't mix it up with candidate की that is different उसमें एक ही प्राइमरी की होगा इन दोनों में से बट ये अलग है ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की इसमें एक से ज्यादा प्राइमरी की साथ दो प्राइमरी की साथ so instead दोनों अलग अलग हो
एक क्लब होगी, एक पेयर को प्राइमरी की मानता है. अब what do you mean by pair? Let's see example table. So this is a table. अब है क्या? अब इसमें एस नो भी प्राइमरी की है एंड पी को भी प्राइमरी की है. सो अब इसमें अब हमें जज करना है कि इस पे एरर आएगा नहीं आएगा. सो आप साथ में देखना. S1 एंड PO1 का पेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड बट नल्स आर अलाउड. सो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. S2 PO4 कोई प्रॉब्लम नहीं है. S1 PO4 कोई प्रॉब्लम नहीं है. S2 PO4, S2 PO4 एरर. वाई? डुप्लीकेट. पहले भी S2 PO4 आ गया था, अब भी S2 PO4 आ गया. ओके. S3 PO2 कोई प्रॉब्लम नहीं है. डुप्लीकेट्स है बट क्वांटिटी एंड बोनस में डुप्लीकेट्स है. नो वन केस. बट इसमें डुप्लीकेट बेसिकली जो आपका पेयर है, जो आपका प्राइमरी की है, उसमें नल नहीं होना चाहिए. नल कैसे हो सकता है? नॉन प्राइमरी की. देयरफॉर इन दोनों में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इसमें है. वाई? बिकॉज प्राइमरी की जो है उसमें नहीं होनी चाहिए. अब लेट्स से अगर इधर डिफाइंड भी होता P05, तब भी ये एरर होता. तब भी इसमें एरर आता बिकॉज प्राइमरी की के अंदर है नल है which is not allowed. Therefore, error. Okay. Next thing जो quite important है, which we are going to study is categories. SQL categories. What is SQL categories? SQL की काफी सारी categories होती हैं जिनमें से हम जो हम करने वाले. Just a second. Categories. This is the first category. Quite important. Actually, all the SQL categories are very important. First is DDA. What is DDA? Data definition. Then में जाने की एज ऑफ नाउ तो बाद में जाएंगे अभी. नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ दिस कैटेगरी is used to create and modify database object. ओके. अगर अभी तक आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज अ डेटाबेस एंड टेबल कहाँ स्टोर हुई, ये सब क्या होगा. तो बेसिकली इमेजिन एक अलमारी है एंड उसके अंदर एक फाइल्स पड़ी हुई है बहुत सारी. तो जो अलमारी है दैट इज डेटाबेस, और जो फाइल्स हैं दैट इज अ टेबल. सो बेसिकली डिफरेंट डेटाबेसेस यानी कि डिफरेंट अलमारी, उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स, सो बेसिकली डिफरेंट टेबल्स. तो एक डेटा तो बेसिकली, अब आप सोचिए कब फाइल के अंदर अलमारी होगी, अलमारी के अंदर फाइल होगी. ऑफ कोर्स अलमारी के अंदर फाइल होगी. सो देयरफॉर डेटाबेस के अंदर टेबल होते हैं. दैट इज एन इम्पोर्टेंट. एंड अब हम टीडीएल पे वापस आ जाते हैं. सर टीडीएल क्या क्या कर सकते हैं? सो इसके जो फंक्शंस होते हैं दैट इज क्रिएट. रीड फंक्शन कैन बी यूज्ड. ऑल्टर फंक्शन कैन बी यूज्ड. एंड ड्रॉप फंक्शन कैन बी. अब इन तीनों का एक एक मतलब होता है. जैसे सर मतलब आई रहा है बट
It is used to create a new database object. It is used to modify the structure needed and it is used to repeat the database object. अब एक चीज आपको इसमें ध्यान देनी है दैट इज स्ट्रक्चर नाउ इसको मैं इतना ध्यान देने को क्यों कर रहा हूँ रीजन भी स्ट्रक्चर मीन्स column related changes. Now what do I mean by column related changes? Wait for some time आएगा जब इसकी बात करेंगे. So drop in. अब the main बात इसमें है TDL जो चीज काफी important है आगे कोर्स में बहुत काम आएगी. TDL commands are now saved or committed by user because these are automatically saved by the compiler. So basically इसका क्या मतलब? Whenever you write a DDL command, you create something or alter something or you drop some basically delete something. So तो इसे आपको सेव नहीं करना होता बिकॉज कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे सेव कर लेता है इसकी चेंजेस इम्प्लीमेंट कर लेता है एंड नेक्स्ट जो चीज आती है जैसे कि ये हो गई ओके वन मोर थिंग वंस दे आर executed they are they these commands cannot be rolled back. Now, what do I mean by roll back? Undo. तो अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया देन आप इसे अनडू नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट चीज जो हो करनी है DDL again हो नेक्स्ट कैटेगरी DML. Now what is DML? इसी की जैसी है DDL की जैसी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is used to implement changes in information. अभी इसे ध्यान दें कि बिल्कुल तो अपने आगे इसके बारे में बात करेंगे it is अब जो मेन चीज है it is also known as quite important thing quite important point it is also known as IDU. What is the IDU? Insert detail update
एंड इसके फीचर्स क्या है? ये इंसर्ट रिव्यू अपडेट it is used to add a new tuple. Now what is a tuple? It is used to add a new tuple. Now what is a tuple? A row. Starting में discuss करता row और record. Now what is delete? Of course, yeah, it is used to delete a tuple. And what is it? Changes value listing tuple. बस इतना ही था DM. Now next DQ. Quite important. What? Actually not what. Very important. He basically its meaning होता है it is used to retrieve data from the table. Now what do I mean retrieve? इसका meaning से इसके बता रहा हूँ because ये अभी बहुत जल्दी इसका हम काम यूज करना होगा. So retrieve करने का क्या मतलब होता है? बेसिकली अगर मैं टेबल पे आऊँ नॉट दिस टेबल से दिस टेबल तो बेसिकली अगर मेरे को सारी सीडी ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ सीडी ड्राइव्स के रेट से प्राइस चाहिए तो फिर ये ऐसे काम करेगा तो फिर डीक्यूएल पिक्चर में आएगा दिस कॉल्ड रिपोर्टर डीक्यू रिट्रीव फ्रॉम द टेबल एंड इसके अंदर सिर्फ एक ही कमांड है विच इज सिलेक्ट द कमांड execution displays output on these field. Another part for this is that the execution is jump related. The basically table completely changed in new book. So all the changes the columns the table are temporary and the last category is or last SQL category is TCA नहीं that is कौन ये वो TCA नहीं है जो आप सोच रहे हो इसलिए है transaction control language least important language sorry least important category but still syllabus में है so
which one is it? It is used to control RD, like, like control the transaction of. Now, what do I mean by transaction? By the way, RDO means DDL means, sorry, RDO means TML means this. So what do I mean by this? Basically, अगर मैंने insert करा, okay, wait, I think मैं कुछ बताना भूल. Oh yes, yes, yes. Okay, sorry, so sorry. तो फिर so DML में जैसे DDL में हमने पढ़ा कि commands are not saved and commands are not saved by user but automatically saved by the compiler. इसमें होता है commands need to be saved or committed by user after the execution. The thing is, DDL में था once they're executed the commands cannot be rolled back. So here once executed the commands can be rolled back. So PCL के अंदर जो चीज आती है वो RDO की एंड व्हाट इज दैट. सो तीन चीजें कमिट. सो बेसिकली अगर आप जस्ट आप कमिट को ऑन कर दीजिए मीन्स एक कमांड आप लिखो कमिट इज इक्वल टू ऑन. तो फिर सारी चीजें अपने आप सेव होती जाएंगी. आपको फिर कुछ भी हर स्टेप के बाद सेव नहीं करनी. कमिट इज ऑन के बाद वो DDL जैसा काम करेगा DML पे. सो कमिट व्हाट इज दैट. कमिट दिस command is used related to this is used to save the transaction. By the way, transaction is command written. Okay, so confusion here. Rollback. What is rollback? Rollback. This command is used to transfer the transaction. And the last is save point. और save point को समझाने की जरूरत नहीं है क्या ये सेव हो जाता है जाता है जैसे आपने देखा कमिट से हर चीज अपने आप सेव हो जाती है एंड रोल बैक से आप अनडू कर सकते हैं. That's up for this part. We will meet in part 2. Okay, bye.